Good morning, students, ladies and gentlemen. From our flagship corporate lecture series, Leadership and Entrepreneurship Aspiration Development Program, Asian Education Group once again brings to you an experienced, enterprising, and an internationally acclaimed achiever today. LEAD is an initiative of AEG which aims at inculcating and developing leadership and the spirit of entrepreneurship among the young generation. Leadership and entrepreneurship development is the need of the hour and a necessary tool for sustainable development, business growth, employment generation, and empowerment. AEG Lead invites industry professionals from the upper echelons and requests them to share their highly valued experiences, which inspire and guide students towards innovative thinking, make them aware of the benefits of new ventures, self development, and attributes for being effective and efficient leaders. Few speakers invited under this program include the late Sri Pranab Mukherjee, ex-President of India, Dr. Kiran Bedi, ex-IPS officer and the current Lieutenant Governor of Puducherry, Mr. Sagar Daryani, founder Wow Momos, General Bikram Singh, former Chief of the Army Staff, Mr. R. K. Somani, Managing Director, HSIL Limited, Mr. Philip Kotler, the father of modern marketing, Mr. Richard Recchi, former CEO, KPMG, R. Gopalakrishnan, former director, Tata Sons Limited, to name a few. Today's webinar brings to mind the words of Robert G. Ingersoll: "We rise by lifting others." On behalf of Asian Education Group, I welcome you all to this webinar, The Clothing Man of India, in conversation with a remarkable individual who believes in reminding the world that true giving always respects and preserves human dignity. The very enterprising trailblazer and Indian social entrepreneur, the Raman Magsaysay awardee, founder, director, Goonj Foundation, Mr. Anshu Gupta. Popularly known as the Clothing Man and the recipient of the 2015 Raymond Magsaysay Award, Mr. Anshu Gupta founded Goonj with a mission to highlight some basic but ignored needs of people on the development agenda, using clothing as a metaphor. Anshu studied mass communication apart from doing a master's in economics and started as a freelance journalist. He left a corporate communication job in 1998 and initiated Goonj. Under his leadership, Goonj has taken the alarming growth of urban waste and turned it into a tool to trigger large scale work on various rural development issues. An Ashoka and Schwab Fellow for Entrepreneurship, Anshu is creatively and flexibly matching and seamlessly weaving urban surplus into the changing priorities and realities of rural marginalized communities. He has built the genesis of a parallel trash based economy by creating barter between efforts of rural communities and urban surplus material as two new currencies. Using the discard of the cities and efforts and knowledge of the poor as a new resource for eliminating poverty, Anshu's work offers the world a sustainable economic model. By prioritizing the dignity of the receiver and putting the decision making back into their hands, Anshu has also added dignity as an important lens to define development for people. Under Anshu's leadership, Goonj has done massive disaster relief and rehab work pan India, turning every disaster into an opportunity to reach resources and attention to the most ignored communities. Listed by the Forbes magazine as one of India's most powerful rural entrepreneurs, Anshu and Goonj have received a series of national and international recognition on innovation, entrepreneurship, governance, and public service, including World Bank's Development Marketplace Award, Changemakers Innovation Award, Jamnalal Bajaj Award for Fair Business Practices. A foodie, an entrepreneur, a thinker, a doer, an avid traveler, photographer, and a journalist by heart, Anshu often pens prose and poetry, giving vent to his feelings and opinions on the issues that bother him about the world around him. The citation of 2015 Magsaysay Award, popularly known as the Nobel Prize of Asia,
conferred on him, says the Board of Trustees recognizes his creative vision in transforming the culture of giving in India, his enterprising leadership in treating cloth as a sustainable development resource for the poor, and in reminding the world that true giving always respects and preserves human dignity. We have a video for you, ladies and gentlemen, and dear students. सुनो, हमने तो कभी नहीं कहा कि जिन मकानों में तुम बसे हो वो हमने बनाए हैं। हमने तो कभी नहीं जताया कि गाड़ियां दौड़ती हैं तुम्हारी जिन सड़कों पर वो हमने बिछाई हैं। हमने तो कभी बोला ही नहीं कि जिस रिक्शा में तुम बैठते हो वो हमारे फेफड़े खींचते हैं। मैं जानता हूँ ढूंढ रहे हो मुझे उस बंद नाली को खोलने के लिए, वो फैक्ट्री की बेजान मशीनों के लिए, रात को जागते रहो की आवाज के लिए, गाड़ी पर जमी मिट्टी को धोने के लिए। और मुझे पता है बाबूजी को मेरे हाथ के ही गोभी के पराठे पसंद हैं। तुम्हें बर्तन धोने से कितनी कोफ्त है। हम तो अब भी सोचते हैं फिर जाने क्यों दिया, क्यों छोड़ा सड़कों पर, क्यों बस और ट्रेन बंद थी, लाठियां क्यों चली हम पर, क्यों चले हम हफ्तों तक भूखे प्यासे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम सिर्फ काम पर याद आते हैं। हमने तो ना स्कूल मांगे, ना सड़क, ना गाड़ियां, ना पक्की छत। फिर एक बार इशारे से फोन करके आवाज देकर रोका तो होता इस अनचाहे सफर से पहले। Mr. Anshu Gupta, we welcome you to this platform at Asian Education Group, where we await eagerly at this webinar to hear about your tremendous journey catapulting you to international recognition and acclaim. I hand over the session to you. Thank you, and good morning, and thank you for inviting me, and all these, big number of students and people who have come, who are spending an hour or so to listen to me. And these days I start my journey or my story with this small clip, what you guys just saw. And the reason for that is very simple. I mean, obviously, somehow this entire crisis, my poetry came back, uh, which was buried somewhere, in the middle of so many other things. And this is something which I started writing called Kovidi, just a little book which I imagined, and a small piece of that is come out as Suffer. uh, and it's important for us to see it again and again because it is a reminder. It is a reminder that how we misbehaved with millions of people of this country, uh, not in the last few months, but maybe in the last few months we still took care of them a little bit. But before that, I mean, I can tell you today, I mean, a whole lot of you can go on Google and find out a lot about Goonj. So maybe I'll limit that narrative uh, to an extent, and then talk more about many other things also, which are alarming, which we certainly need to think over, because this virus has given us an opportunity to think and at least rethink on certain things which didn't work. So the fanciest possible airports in the world didn't work. The biggest possible private hospitals didn't work. Two vehicles in front of my house, my four flats, whatever I have, when I say I represent each one of us here, didn't work. What actually worked is the public health center somewhere.
an absolute ignored government hospital, an absolutely ignored government nurse, often ignored, and where we say bad things to the municipality corporation workers, the so-called safai karamcharis as we call them, you know, and the people who were taking risk. What we missed majorly is the proper toilets in rural India in the schools, because when people were traveling, they were actually when the quarantine was happening there, they wanted some toilets, and the toilets were missing in many cases. You know, that is what mattered for us. And what mattered for us also is every single person who made our house. What mattered for us is every single farmer who is feeding us for decades or for centuries or for years, and we have been ignoring them. I mean, how easy is to call a farmer an unskilled professional, or we don't even call professional, we call farming an unskilled profession. And how easy is to ignore the very basic fact that farmers are growing more than hundreds of different varieties of rice and pulses and spices, and they're still not called innovator, they're still not called skilled. And people like us who often do a lot of things on pen and paper are called skilled. So I think this is the time, at least this particular uh, crisis somewhere broke me as an individual, as a human being, because I'm still thinking, and it's not just for the saying, because this is something which you will find in whole lot of my sessions in the last few months. Because as a person who has seen so many disasters in the last 2 decades, uh, who has, because of my journalism kida and my a little bit of passion of photography, which I hardly get chance nowadays. So I travel, and I spend about a month, 1.5 month in every single big disaster, and I try to come back to the ground, because the biggest problem with people like us, uh, we get so many standing ovation and so many lectures that we don't know when the air will go here. So I think a disaster is a big leveler. So once you go and spend time in the disasters, you actually see that the biggest possible houses have also collapsed somewhere. Uh, the biggest possible cars and the most expensive cars are also now washed away. So it brings a level to you. So I've seen a large number of disasters myself, right from my college days. Uttarkashi was my first exposure in 1991, uh, where I had never seen villages before that. I had no exposure of disasters. I'm a kid who is grown up in the urban India, largely smaller towns, because my father's job was transferable, and we used to be thrown to the remote places because of his way of working, and his rightfulness. So we were thrown to the places like Chakrata, Banbasa, which most of us don't even know. So I've grown there, but still I had not seen villages in that way. I had not seen disaster myself. So that was my first exposure, and I'll share a little bit about it. But from that disaster to the recent, Kerala floods a couple of years back, where I remained there for many days. I set up the system with my team and all that. And as a photographer, I have huge collections of the distress, of the destruction, and of dead bodies, uh, which is very alarming, which is very sad. Fine, when you look through those pictures and all, it makes you very sad. But I think this disaster, uh, I became very sad, not because this was a one disaster where I didn't see a lot of dead bodies, but I see the living human being in the most distressful way, or walking. And my question to all of us here, before I narrate the story of Gunj, in the next few minutes, is what went wrong? How come these millions of people didn't trust any government, any corporate, any institution, any neighborhood? What kind of society or fabric have we woven? I mean, that's my question. How come the people who made house for me remained homeless? And how come the people who have been feeding me are or do not have food? And you know
we give them 10 kg, 5 kg of rice, and then we boast and we sing a song that they are the beneficiaries, and we have worked with 100,000 beneficiaries or whatever number we all talk about. Someone talks about 10, someone talks about 10 lakh, but all of us are treating them as beneficiary without understanding that we are the people who have been beneficiary uh, for decades, as I just said. Uh, so somewhere this is a time when we really relook into it, and this small suffer clip is just a reminder that the crisis was not over. Whole lot of us are migrated people. Unfortunately, we call someone who is not wearing good clothes in with our standard fine. I mean, because we think these are not good. We decide what is good, what is not good, on behalf of millions of people. Uh, so we call them migrant worker without understanding that even we are migrant worker. I mean, we are just privileged people. There's no difference in that. So I am an absolute migrant. When I came to do my mass communication to Delhi from Dehradun, I literally came as a migrant, but I was a privileged migrant. I was able to afford a room. I was still looking for 10 rupees worth of Amritsari kulcha and all that, because that was affordable food, or the chola kulcha, the famous Delhi's chola kulcha. But I had to settle down here. I was certainly a privileged migrant, and the difference is that I migrated by choice. I had an option even to do my doctorate, or PhD in Dehradun, which I didn't do once I came to Delhi, because it had different opportunities for me. But if you see the larger number of people and almost every single person who walked back, can you imagine that these are the people who didn't migrate by choice, but that migration was the migration by compulsion, because we didn't take care of the 70% people of India in the rural India, where even today in 5,000 rupees, 4,000 rupees, you can survive and you can live life with much more dignity. You are forced to come to the cities where even if you earn 10,000, 12,000 rupees, become our become our driver, become our full-time, support, because of whom all of us are listening here, someone who's cooking for us in our kitchen, someone who's washing our utensils or clothes, right? You come to that role and then end up staying in a slum and live a life without any dignity, earn whatever. So they are the people who are forced for migration, and it is so unfortunate that we again send them back to the places from where they start, where they in any case they had no opportunity. I think that is what is bothering me a lot, and I'm still trying to understand that what is the solution of it. The solution is to distribute sweets on my birthday, or chocolates on my birthday, or on August 15 to the kids of slums, and or go for an hour and teach those kids and boast that I am a volunteer. Or the solution is that to go back to the villages and see what can we do so that the forced migration does not happen, which unfortunately is happening again, because again those people are forced to come back to the cities in the most exploited scenario. And all this is extremely important because we can only suppress people to a certain extent. उसके बाद डर खत्म हो जाता है लोगों का. तो जो just Ravi ji, just want to understand that all the people understand Hindi here. I'm sure there's nothing, yeah, there's no foreign student and all. No. So I can use my हिंदी because Yes, of course. मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत और गुस्सा जो है वो हिंदी में मैं बेटर जाहिर कर सकता हूँ, because that's what I think in that language. तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सप्रेशन की एक लिमिट है, उसके बाद डर खत्म हो जाता है. जो सड़क पे चलते हुए लोगों का हुआ, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट they were so suppressed, they were the way they were beaten up and all, they decided to walk. आप मारिए, आप छिड़काव कीजिए कीटनाशक का, बट एंटी स्प्रे कीजिए, जो मर्जी कीजिए, बट आई विल वॉक. एंड दैट्स हाउ दे वॉक. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू hundreds and thousands of fellow citizens of this country and the NGO sector. My deep gratitude to literally the common citizen of this country and the NGOs for sure, who made sure कि उनसे जितना हो सके they kept feeding people. I mean, I know people
who were actually getting up at 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, and using all their utensils and cookers and bhagonas to make food for the people who were walking outside. I know the people who have sold their pieces of small land or pieces of their belongings to make sure that the people who are walking are supported. Hats off to that chunk of Indians. I mean, we are so proud of those hundreds and thousands of people, and maybe that is the reason we are able to, at least at that time, we were able to control it a bit. Not huge, or otherwise the disaster would have been much bigger. And just to come back to the basic in the next, say, about 10 minutes, and then I really want to have a lot of interaction with you guys. Uh, so, the people whom you saw, it was not a new chunk of people, right? Those people exist. Those people were here in the city of Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, everywhere, in the small and big town, everywhere. We call them homeless people, we call them labor, we see them on labor chalk, we see them coming to our homes, wearing uniform as driver and driving us, all those people, right? So how this journey started actually started with the people, who now migrated. It was so when I came from Dehradun, for me, winters became a big challenge because on my scooter, when I used to roam around and as a budding journalist and all, I was well covered, so I had no issues. Fine, I'm coming from a so-called good middle class family, so I had no issues. But I often used to see these hundreds of people on the road, especially on the footpath. फ्लाईओवर्स उस समय इतने नहीं थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 1990. तो उसके नीचे अब जो लोग मिलते हैं वो तब नहीं मिला करते थे, बट ऑफन वी यूज्ड टू फाइंड पीपल इन द बस शेड्स and all across. And then on the red light, these kids used to come asking for something the moment the red light used to happen, and everything was new for me because Dehradun that time didn't have flyovers. Dehradun that time didn't have red lights. So I was a small town kid, or youth, and all this was new to me. And I used to wonder कि ये winters में how come these kids are not wearing proper cloth and then asking for it. क्योंकि मैं शायद अभी तो आप मुझे बेवकूफ़ बोलेंगे कि अरे इतना भी नहीं पता था क्या, बट नहीं पता था भाई. हम गूगल के ज़माने में नहीं थे. हम छोटे शहरों से आए हुए बच्चे थे. हमारे अपने वैल्यू सिस्टम थे, हमारी अपनी नॉलेज थी, बहुत डीप नॉलेज थी, बट दैट डीप नॉलेज वाज ऑफ सर्टेन अदर थिंग्स, not the way how cities operate. We had not seen slums, we had not seen poverty, we didn't know anything about migration, nothing at all. आज तो हम लोग गूगल पे पढ़ के गलत फहमी में हो जाते हैं कि हमको सब कुछ पता है. दैट्स ऑल्सो a गलत फहमी of most of us. तो मैं ऐसे ही घूमते घूमते एक बार आई वाज इन ओल्ड दिल्ली, और ओल्ड दिल्ली में सडनली आई सॉ दिस रिक्शा जिसपे हिंदी में लिखा था दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला. तो आई जस्ट वेंट टू दैट फैमिली, फॉलोड दैट रिक्शा. रिक्शा मीन्स ठेला था वो, और उसकी पिक्चर्स आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट पे कहीं जरूर. आमना जी उसमें बैठी थी जो ब्लाइंड थी, और हबीब भाई उसको चला रहे थे. तो आई जस्ट फॉलोड देम. तो पता लगा कि दिस कपल इज बेसिकली पिकिंग अप अनक्लेम्ड डेड बॉडीज फॉर द लोकल पुलिस, and their full-time profession and धंधा is to pick up these dead bodies. So पार्क में खेलते हुए बच्चे से लेके दिल्ली पुलिस की वैन तक, every or the PCR, they come and then they tell him, and then the couple goes, they pick up the dead body and bring it to the crematorium in the system, and for every dead body they were paid 20 rupees and 2 meter of white cloth. I didn't even know कि ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता लाइफ में. So then I spent a week with them, early morning till late night. Used to be with them. I used to have my bed tea with them. These were winters. स्कूटर पे पहुंच जाता था सुबह सुबह, क्योंकि सुबह इनके पास ज़्यादा खबरें आती थी डेड बॉडीज की. रात को डेथ ज़्यादा होती थी इस तरह की, एक्सीडेंट से लेके और something. And in that 1 week, and then later on, many days I spent with them. I saw a large number of dead bodies of all kind, mutilated, accident, लटके हुए, suicide, whole lot of things. एंड हबीब भाई से बात हो रही थी, तो दो बातें बोली. हबीब भाई ने बोला कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, और कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं. नाउ हाउ कैन यू इमेजिन दिस कि आपका डेड बॉडी उठाने का काम, वो भी रैंडम डेड बॉडीज, नॉट अफेक्टेड बाय एन एक्सीडेंट और डिजास्टर. हाउ कैन दिस हैपन? तो
पता लगा कि every 24 hours Habib bhai was picking up 10 to 12 dead bodies in the range of 4, 5, 6 kilometers wherever he was able to take his rickshaw. In the summers, the average used to be 4 to 5. Okay, so I thought कि ये तो now the cold is killing people. Uh, Years later, I realized that no, the cold is not killing people, because if the cold kills people, I would have died. If I survive on my scooter at a speed of 60, 70 kilometers per hour, even at 10 o'clock in the night when I'm coming back from him, from LNJP, Daryaganj area to Sabdjang Enclave or wherever I used to stay, it is not the cold. It is actually the lack of clothing, because that's the only thing which I had extra and which saved me. उनकी एक छोटी सी बेटी थी, 5-6 साल की, बानो करके बच्ची थी, जिसने बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया था, इट विल टेक यू आल्सो, एंड व्हिच इज ट्रू। उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। एंड इट्स अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी ऑफ those days in a leading magazine called Saptaik Hindustan. It was a 2-pager published. और मैं अर्बन एजुकेटेड बच्चा हूँ, था और हूँ, और बड़ा लॉजिकल अपने को समझता हूँ, तो मैं लॉजिक्स लगाता रहा और ये कहता रहा कि डेड बॉडीज तो ठंडी होती हैं, डेड बॉडीज आर कोल्ड, because that's what my education taught me. My education never taught me the compulsion part of it. But that was a true story of the family with whom I spent a lot of time and later on a lot of years. Now Habib Bhai is no more. That little girl grown up, gave birth to a couple of kids, also no more. आमना जी अभी बची थी कुछ टाइम पहले तक जब मैं मिला था, बट उस पूरे इंसिडेंट ने मुझे हिलाया बहुत बुरी तरह से, और उस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक उत्तराखंड में हुआ, जो मैंने आपको बोला था उसके आसपास ही हुआ, and I think it gave a vision on clothing, because what that time we didn't know anything, but what we realized कि जब भी आप बात करते हैं तो कहते हैं 3 बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, कहते हैं ना सब लोग। मूवी भी बनी है इंडिया में तो बुनियादी ज़रूरतों पे, और जब आप वर्ल्ड के डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से अभी कोविड तक, वायरस तक, पेंडेमिक तक, बट क्लोथिंग आपको कभी सब्जेक्ट की तरह लिखा नहीं मिलेगा। एंड इट्स सो सैड, समथिंग unfortunately in a country where you decide on the basis of what cloth someone is wearing, कि गरीब है कि अमीर है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कल्चर्ड है, अनकल्चर्ड है, सब तो आप कपड़े के बेस पे तय कर देते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री। सो द फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ पॉवर्टी इज एक्चुअली नॉट अ सब्जेक्ट। तो कुछ साल तक क्योंकि बड़ा लड़का था घर का, बड़ा बच्चा था, और कुछ करने निकला था, तो कुछ साल तक आई स्टार्टेड माय करियर as a copywriter with an agency. I left that very soon, joined a public sector, then joined private sector, and in 98 left my job, and that's how Goon was started with 67 units of personal clothing. Today we deal with almost 6,000 tons, which is almost about, I think, 60 lakh units of 60 lakh kgs of material every year. We are a team of almost 1,000 people, full-time, part-time, piece rate everywhere, pan India. We work in about 25 states, deal with second-hand goods and the new goods, which is the retail chain wastage, or literally from cloth, utensil, footwear to old doors, windows, pipe fittings. I think often in joke we say that at Goonj, except a shit pot, we actually accept everything which is reusable. Now, just a very small thing about how we are trying to do. So we said that charity is one of the worst thing which happens to the receiver. Charity might be a good thing, favorite thing, with all good intentions of the doer, but not of the receiver, because charity kills dignity. And dignity is something which is extremely important for each one of us. तो सड़कों पे जो लोग चल रहे थे, उनमें से कोई हमारे पास कुछ भी मांगने नहीं आया। गांव में जो 15,000 फार्मर्स हर साल सुसाइड करते हैं, 12 से 15,000, वो तो और वो भी डेटा है, आई डोंट नो रियल क्या है, उनमें से कोई हमारे पास आज तक कुछ मांगने नहीं आया, बिकॉज उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान, द सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिग्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी हैव नो राइट टू किल और चैलेंज द डिग्निटी ऑफ समवन। और यदि खैरात और रिलीफ और एनीथिंग लाइक दिस, if it is not acceptable to us, the 600 odd people who are listening today, how can we really do the same thing to someone who has the same body, same mind, same dignity,
same thing which God has given. मैं कहाँ पैदा होऊंगा, ये तो मेरा बचपन से प्रिविलेज है, जन्म से प्रिविलेज है कि मैं बिहार की किसी ट्राइब में या किसी रिमोट एरिया में या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में पैदा नहीं हुआ। भगवान ऊपर वाले ने मुझको प्रिविलेज पैदा किया था कि मुझे कम से कम अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद I have no right to challenge the dignity of people. So the simple model of Goon, the 6,000 tons of material comes to us through various collections, sources, individuals, institutions, and all that. It goes through a very, very rigorous process of matching the need of people, because the biggest problem with the donation mindset is that we give what we have. We often don't give what people need. And needs are completely different. तो पहला तो काम हमने ये किया कि हमने डोनेशन वर्ड को चोट किया और हमने कहा कि ये बड़ा डीमीनिंग सा शब्द है, बिकॉज द मोमेंट यू से डोनेशन यू कीप योरसेल्फ ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म एंड यू लुक डाउन. And in any case, when we are talking about our second-hand goods, cloth, utensil, footwear, furniture, whatever, with what right do we call it a donation? It is actually a discard. We are not using it, that's why we are giving it. Fine. और कपड़े की तो कहानी बड़ी सिंपल है कि पहले मन से गया फिर तन से गया. आज आपका इस कुर्ते से, साड़ी से, सूट से मन भर जाए, आप कल उसको देखना नहीं चाहते हैं. तो हमने कहा कि भाई बदलते हैं सोच को and let us be thankful to the people who are using our second hand material, because they are the people who keep our emotions intact, who value our emotions. Because सामान से हम बड़े इमोशनली जुड़े होते हैं, मोबाइल के कवर तक से बड़े इमोशनली जुड़े होते हैं, है ना. इससे आजकल बड़े इमोशनली जुड़ गए हैं कि मेरा ये वाला कहाँ है एग्जैक्टली. They are the people who keep those emotions intact, who value those emotions. They are the people who also value everything on which we have spent our hard-earned money. And it was very useful for us for some time and very dear to us. So that is how we wanted to change the definition. And we said no donation word, just say we are giving it, because that's what we're doing it. और दीजिए वो जो लोग इस्तेमाल कर सकें. आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे 6,000 tons में we get the best possible material, neatly ironed, repaired, new material, lot of new stuff we receive, lots and lots of new material we receive. But we also receive used sanitary pads. We also receive blood-soaked undergarment. We also received blood, leftover food or expired medicine and food, because there are enough people who have an extremely distorted mindset. उनको लगता है कि सामने वाले वही है जो हम कचरे में डालते हैं, वो सामने वाले को भी दिया जा सकता है. ठीक है, I mean that's an attitude of some people, but largely we survive, we grow on the goodness of people, not on the basis of bad people. तो ये सामान आता है, बहुत नीटली पैक होता है. वी मैच द नीड, एज आई सेड. सो वी विल आइडेंटिफाई बिहार में क्या चाहिए, उड़ीसा में क्या चाहिए, आंध्रा में क्या चाहिए, तमिलनाडु में क्या चाहिए. दैट्स हाउ इट ऑपरेट. एंड देन द लास्ट पार्ट इज द हाउ वी डू इन द विलेजेस. So we said, as I said, that the biggest asset of village people is their self-respect. So no one is given anything free of cost because they don't want it. Not that we want to give and they want to take. No, they don't want it because for them self-respect is extremely important. तो वो लोग जाते हैं, वो अपने they find out a big problem in their village or in their community. So a village community comes and say that we want to make a road. Someone says we want to make a bamboo bridge. Someone says we have to dig a well or we have to clean the pond. To give you a very simple fact, we do some 7,000 odd such projects every year. In the last financial year, 1920, we made or repaired about 500 kilometers of village road. And the model is that the family kit which we are creating out of, urban underutilized material is now a new currency, is now a new reward model. तो आप अपनी प्रॉब्लम चुनिए, आप उस पर काम कीजिए, बदले में बहुत इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ यू विल रिसीव दिस फैमिली किट. सो 2-3 चीजें होती हैं इसमें. एक तो द ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया विच इज बार्टर इकोनॉमी एंड द श्रमदान इज रिवाइव्ड इन अ बिग वे. Barter economy with 2 new currencies. On one side, it is urban underutilized material. On the other side, it is village wisdom and village labor, or community wisdom and community labor. Shramdan is revived. तीसरा बहुत important part है कि the decision making is now in the hand of last person. People like us are not going and saying every village will have a road or a pond, but the village will decide or the community will decide what is most important for them, and then they will work.
And the fourth part is that the giving is dignified. No one is doing charity in the entire process. You give a trouser to someone and say it is mine, person will say yes, it is yours. But then the person works on cleaning backwater in Kerala, you give a trouser, say it is mine, the person will say it might be yours, but I have earned it. So that narrative and that language is changing. There are a large number of other initiatives, but I'll stop here because I do want to get into the Q&A and really learn from you and understand from you and respond to your queries. We also have a very large initiative on the menstrual hygiene. We were the first people who spoke about this as a subject in India because this is the same country. And it's not only this country, large part of the world population also. Menses or menstruation is a very taboo subject. We don't even speak about it. But the fact also remains that millions and crores of women and girls are forced to use sand, ash, jute gunny bags, rugs, rags, newspaper, grass, anything and everything which can stop or absorb. And for me, a life-changing experience happened in Firozabad way back in 2004-5, where I heard from a lady that how one of her sister used a piece of blouse during menses as sanitary pad, and how it had a hook, and how she died of tetanus. So today we are one of the largest cloth pad maker people, and also using it as a tool to open up the subject. Stopping here to uh, move to the next part of the session. Mr. Anshu, I just wanted to say one thing. I mean, after listening to your talk and the story, I mean, a moving uh, manner in which you just conveyed to us, I realized that you very aptly named Gunj. You know, it somehow resounds and it echoes with the wretchedness and the misery that has been overlooked by so many privileged. And I think people do need to take a second look at what they are just not looking at. That was really wonderful listening to you. In fact, before I begin with those questions that we have here, how did you come upon this name Goons for your foundation? So today, I can write a paper on this, because now it's a journey of 21 years. But honestly, that particular time in 98, 99, it was a beautiful poetic word, and someone who loves to write uh, poetry. आई थिंक वो बहुत, और जिसको एक थोड़ी हिंदी से मोहब्बत भी है, क्योंकि हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में पले बड़े हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा शब्द था. But the fact also remains that recently, few years back, we discovered a document which was just a pager, which was written in a very bad handwriting by me in '98 when I left my job with the Scots, and it says कि इसकी आवाज़ फैलनी चाहिए, मतलब as an idea it needs to spread. And today it is very apt because right from the beginning we are saying that we do not want to grow as an organization, we want to grow as an idea. Even my MSSA acceptance speech says that we are giving you a copyright to copy our idea. We want more people to copy and replicate the idea and correct it and add their wisdom. So that way, fortunately, the way it turned out, the way it is grown and the way it is spreading as a movement, as as something which has ownership by hundreds and thousands of well-wishers and people. I think now the name we find is, I think, अच्छा ही selection हो गया था उस समय, by chance I can say. It just fits. Yeah. Okay. So Goons is a very diversified NGO. How do you cope up with so many different issues at the same time? देखिए, one very important part is that all these issues are interrelated, right? And if you go deeper in the subject, then you will understand that if you have to improve the condition of education in Bundelkhand, right, which is 13 districts of Madhya Pradesh and UP, just next door to Delhi, and known for its poverty. So if you have to improve education there, now just listen to this. I'm talking to the students also. You will have to, so just by distributing pencil or eraser or bringing a teacher or computer will not solve the problem. Education will improve when the drinking water situation or the water for agriculture will improve in that area, because otherwise for 4 to 5 months people are forced to migrate,
the midday meal will still be made in papers, but the students will not be there. So even if you make the best possible resources, the best possible infrastructure for the school, right, and the best possible teachers, and have a good science lab, it'll be of no use. So you have to go to the root. I mean, what we have learned in this journey is that instead of treating malaria, it is important to kill the mosquito. And unfortunately, most of us get into the band-aid solutions. We do not get into the cause of it. So I think that is how all our work is interrelated, and and that is why we try to make a dent on those many things. But for sure, in many cases, we all have to choose our battles, and there are things which very painfully we decide not to do, right? Because A, that's not our expertise. Uh, B, we need to fix priorities, for sure, for the communities and for ourselves also, that what are we good in. And C, we also have to see the optimum utilization of our time and resources. That if I start giving boats after tsunami, is it okay to give 50 boats to 50 people after tsunami, or it is okay to work on the issues which we know better and reach out to 1,000 people? Because in this country, volume also matters. So I often tell people ki, although we are known for our very minute systems and all, but I often even tell the team that many times you have to just don't talk about best, because many times you need 100 good at the cost of one best. So I think that theory goes all across, even in choosing our battles and work. Kindly explain the not just piece of cloth, NJPC, movement of Gunj. So as I just touched upon this menstrual hygiene subject, and it was never a subject. And 2004-5, like me, if you would have gone to Google and you would have typed sanitary pad, sanitary napkin, not even a single major research or problem statement or solution was there for the larger part of the country or the world. And this is such a subject that even all of us, in this age group, must have bought sanitary pads for our sisters, our wife, our family member, or someone. And it is so strange that when you go to the market and buy a sanitary pad, you either the chemist himself or herself will pack it in a black polythene or a newspaper, or we will ask them to do it, right? And as I often joke that with that black polythene, we keep roaming in the market. Everyone knows what is there in it, but there is a culture of shame and silence, so we don't talk about it. So when we were working on cloth, we were obviously getting a huge amount of oversized cloth, because that's a big difference. Like in urban India, you have most common trouser size is 34 and above, and in rural India, it is still 26 to 30. And same goes for ladies' suits, same goes for everything. So often when this oversized cloth was going to them, we were talking about this subject and we were telling them that this is how it can be used. Uh, and then because slowly we started realizing that women are using sand, ash, jute bags, as I just said, rugs, rags, newspaper, gai ka gobar, bhains ka gobar, whatever is can absorb. And then this thing happened in Firozabad. To usma, in that Firozabad incident, when we found that the this story of lady dying because of tetanus and hook, I think that was a little bit too much for us to handle, because we don't come from the health sector. We didn't even know that there is something called menstrual hygiene exists. We are not. We are coming from different cultures or different sectors, even in our education. I think that gave us a completely major shock, and we decided that now we will produce our own pads. We will go deeper in this subject, and it was so shocking to see that there was nothing happening, and there was no public discourse on this. So that's how. So we just started saying that it is not just a piece of cloth. I mean, that's how it was very aptly named. It 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 can actually save life. I mean, a small handkerchief, आपकी जो चुन्नी है लेडीज सूट की, उसके 4 5 6 सैनिटरी पैड बन सकते हैं यदि आप देखें. And that's what the women immediately needs. It has to be reusable. It has to be affordable. So that's how this entire movement is started. We have made millions of pads. All of you are invited to
come to our Sarita Vihar center and see that. The only difference is that we are not using it just as a product. We are using it as a tool. So we do this Chuppi Todo Baithak. That's our flagship work. And we go to these communities, urban, rural, everywhere. I mean, even kitty parties in India, to make them aware of the subject. कि भाई आप, if nothing else, all the people in New Friends Colony, Greater Kailash, Sarita Vihar are associated with 3 to 4 women every day who are coming and helping them out. Can you at least start looking at the issues of the women around you? So that's how we call it has grown literally as a movement. And now, fortunately, a lot of people have entered in this field and have started doing a lot of work. I mean, that's what is really, really good to see. So is it different from that cloth for work model? Completely different. I mean, cloth for work, which is now called Dignity for Work, is the largely the rural infrastructure and water sanitation initiative where people are rewarded in kind. Not just a piece of cloth is just focused on the menstrual hygiene subject, but the only difference is that we connect Dignity for Work in menstrual hygiene or NJPC issue also, where women actually build up their water bodies, their washrooms, their safe places to change pads and go for the morning calls and all. That is so we somewhere, as I said, this is what I said, that all these things are connected. So now, like a small piece of cloth in the shape of a sanitary pad, which is called my pad, now is also making sure that women are thinking of their own infrastructure. Women are developing their own kitchen gardens to have more nutrition so that they can handle menses in a better way. All these are related. I mean, somehow we have just been able to weave these together. So we have our students eagerly waiting in the wings to put their questions to you, Mr. Anshu. First So, in line is Ms. Kajal. Good afternoon, sir. I guess, yeah. So my question to you is, what problems did you have faced while creating Goonj and how did you respond to them? So, Dekho Kagel, I think one thing what we need to answer is that uh, you should not consider these problems. It's a part of your journey, and every journey has its own curve. तो कहीं पर आपको जैसे हमारे जैसे काम में ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स वाज ए मेजर टसल, मॉनेटरी थिंग वाज मेजर टसल. हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं. वी डिडंट हैव एनी बैकअप. कोई हमारे साथ कोई, there was no big industrialist standing with us, there was no money available for us, and it's a hardcore logistics job. I mean, you can arrange for 5 gunny bags on your own, the boris, but if you have to arrange for 500, it cost. If you have to send a truck from here to Manipur right now, just the cost of trucking will happen about a lakh or 1.5 lakh rupees. And even when we started growing, large number of people started giving their material, but they were not understanding that it's all about logistics. आप यदि मुझे एक, if you give me a t-shirt, this t-shirt will be sorted by a paid person sitting at a paid place, will be transported by a paid transport. So people even today, large number of people just send us material. They forget कि यदि अपना 10 किलो चावल आप लाओगे तो रिक्शा वाले को पैसा दोगे, उठाने वाले को पैसा दोगे, बट हमारे यहाँ 100 किलो सामान आप कैसे रख जाते हो without taking care of the logistics of it. So that all those remained issues with us. But we said कि हम तो, क्योंकि हम बड़े प्राउड मिडिल क्लास के लोग थे, हमने कभी हाथ फैलाया नहीं किसी के आगे, तो नहीं फैला सकते थे. वो हमारा वैल्यू सिस्टम था. इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वैल्यू सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास और होता क्या है, वो सबसे बड़ी चीज, वो सबसे बड़ा एसेट है. तो just to share one example, in the initial phase, actually we were married for 3 years and हमारा वो ड्राइंग रूम बड़ा प्यारा सा था, बड़ा खूबसूरत केन फर्नीचर था, सब कुछ था. हमने उसको सबको किनारे किया, उसको वर्कशॉप में कन्वर्ट किया, और कहीं से एक बैम्बू की पुरानी घड़ी मिल गई थी हमको, तो वी सेड कि अब हम बैम्बू की घड़ियाँ बनाएंगे. तो देन हमारी जो हाउस हेल्प थी, उनके हस्बैंड सुभाष, who also used to drink a lot and used to beat and all, we started involving him because उसको थोड़ी बहुत कारपेंट्री आती थी. तो मैंने उससे कारपेंट्री सीखी, और बहुत सारे हम ये प्रहलादपुर से बैम्बू और सारे रंदा वंदा जो औजार होते हैं वो लाए, और उसके बाद वी स्टार्टेड मेकिंग दोज बैम्बू क्लॉक्स. तो 24 घंटे हम लोग लगा रहते थे. फिर February 99 में वी एक्चुअली टुक सम स्पेस इन दिल्ली हार्ट,
and made 22 bamboo watches or sold it there. And then for years we kept making paper bags, bamboo watches, bamboo clocks, बड़ी वाली डिजाइनर बहुत मजे ले लेके बनाया करते थे. फिर कुछ कपड़े की चीजें बनानी शुरू कर दी. तो मतलब हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे. और धीरे धीरे लोगों को काम समझ आने लगा, तो लोगों का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आने लगा बहुत. बट किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाया, कोई काम नहीं रोका. दिल्ली हाट में ये टाइम हुआ था, हमें तो पता नहीं था कि 22 घड़ी बिक जाएंगी हमारी, क्योंकि नया मामला था. आज तक कभी दुकान पे कभी खड़े ही नहीं हुए थे, अपनी स्टॉल तो कभी लगाई नहीं थी. अब कॉर्पोरेट लाइफ जी के निकले थे, थोड़ी बहुत जो भी थी. बट एक टाइम आया था कि हम लोग उस स्टॉल के पीछे बैठ के भी घड़ियां बनाया करते थे, और रात को आके घड़ी बनाते थे, क्योंकि हर दिन हमको 10-15 घड़ियों की जरूरत थी. मतलब इतना वो बिक रहा था. जैसे कि आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. बाकी इश्यूज तो बहुत सारे आए ऑब्वियसली, और क्योंकि मैंने कभी पर्सनली, हमने किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम वर्ड नहीं कहा. हमने हमेशा ये कहा कि ये जर्नी का हिस्सा है, और आप इतने किस्मत वाले नहीं हो सकते कि सारे सुख आपको मिले और सारे दुख पड़ोसी को मिले, या सारी प्रॉब्लम्स पड़ोसी को मिले. इससे पार्ट एंड पार्सल. एंड टू बी ऑनेस्ट, नाउ आई जस्ट एंजॉय दिस, कि क्योंकि अदरवाइज लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है, बड़ी बड़ी स्टैटिक सी हो जाती है, कि कोई कोई इशू ही नहीं आ रहा आपका, तो आप तो चल रहे हो मजे से. सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो कंप्यूटर पे बैठ के. तो ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई ना, ये तो बर्बाद हो गई जिंदगी. मतलब कोई तो चैलेंज हो आपको कहीं तो, है ना. चाहे आपके अपने, हमारे हमारे अपने स्टोर्स में एक बार दिवाली के टाइम में आग लगी, और कोई से अबाउट ऑलमोस्ट 3,500 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस with huge amount of material was completely gutted. मतलब शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक, दिवाली के दिन आग लगी दिवाली के किसी पटाखे से. या हमारे बॉम्बे का पूरा सेंटर, द फर्स्ट फ्लोर ऑफ 4,000 स्क्वायर फीट वाज कंप्लीटली फ्लडेड, 6-7 फीट ऑफ वाटर. और आपको बर्बाद होने के लिए सिर्फ 3 फीट चाहिए ना. 3 फीट के ऊपर तो दीवार होती है किसी भी फ्लड में भी. एंड वी जस्ट बाउंस बैक. Our Wayanad office is flooded twice in the last 2 years, but we just bounce back. जैसे ठीक है यार, मतलब बाढ़ का मतलब ये थोड़ी है कि बाढ़ सिर्फ सामने ही आएगी और आप रिलीफ के लिए पहुंचोगे. बाढ़ आपके घर में भी आ सकती है. Just learn that, because बाढ़ does not differentiate. I mean, that should Thank be you. the way to, in my opinion, to tackle it. I mean, take it as a part of life. Thank you, sir. So, Mr. Anshu, did the conferment of the Raman Magsaysay Award make a difference to Goonj as an institution and to you on a personal front? देखिए, एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर श्योर उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे जो गांव के दूर दराज के भी लोग थे, और जिनको मैग्सेसे की स्पेलिंग नहीं आती थी, जिनको ज़िंदगी में ये नहीं पता था कि मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है, उन लोगों ने भी मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि उनको एक एक आपको एक अच्छा लगता है. पहली बात तो ये है. हमारे फाइनेंशियल इश्यूज में या किसी चीज़ में और फ़र्क आया, इसको तो मैं नहीं कह सकता एज ऑफ नाउ. बट हाँ, आप इट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी प्राउड टू सी कि जो लोग आपके, जिन लोगों को आप सिर्फ देखा करते थे, चाहे वो विनोबा भावे हों, चाहे वो मदर टेरेसा हों, उस एक छोटी सी लिस्ट में गिने चुने लोगों की आपका नाम जुड़ गया. आई थिंक इट्स ए ह्यूज ऑनर. It's a huge honor to the work, to the idea, to everyone who is a part of team or who is a volunteer. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एक चीज़ थी हम लोगों के लिए. और पर्सनली मैं लोगों से मजे लेता हूँ जब वो ये सवाल पूछते हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो, फ़र्क तो आया है. पहले मैं गेस्ट होता था, अब चीफ गेस्ट होने लगा हूँ. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज देयर, जस्ट इन द ऑन अ लाइटर साइड ऑफ इट. Sounds very nice. We have Divya with her question ready. Good morning, sir. Sir, how can I make such an excellent NGO like yours, and what was its first step? तो एक तो you don't have to make an excellent NGO or whatever you do, you have to really just go for the excellence of it. Because one thing, if you see, and be away from media, be away from limelight, which is becoming very complicated for people in the era of social media. Because आज की डेट में तो we have come to a level where we will go in a slum, spend half an hour somewhere, and then immediately put it on the Facebook, and we will also
justify it by saying it will motivate more people. Right? I do not believe in those theories at all, because हमारा गुंज में बहुत simple motto है, and that is what we have been practicing. We have been saying that there are two ways of working. One is that you talk about the work, the other is the work talks about you. And the second one is an extremely, you need a lot of patience for that, बिकॉज उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत बाद में मिलते हैं. तो आप यदि गूंज को उठा के देखेंगे तो पहले 10 साल में हमें हार्डली कोई मेजर मीडिया कवरेज या वो सब मिला. और दैट टू विद द फैक्ट दैट माय वाइफ मीनाक्षी, हु इज आल्सो द co-founder, comes, she used to look after BBC South Asia media relation for almost a decade, and I also come from that background of media. We never went to any of our friends to write about us. Rather, our friends came to know later on because one of their journalists had done a story on us. We never went to them. तो और हमने processes पे काम किया, और because we were dealing with the second hand material, simple criteria of us was we will only give what we can use. क्योंकि इतना discarded material, इतना oversize आता था हमारे पास में, हमने we didn't throw even a single inch of it. हमने उसके बहुत सारे products निकाले, we made use of it. But simple criteria dignity था. सिंपल क्राइटेरिया था कि यदि वो सामने सामान रखा है तो आपको लगना चाहिए कि मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, आई कैन ऑल्सो यूज इट. तो सामने वाले की डिग्निटी कहीं चैलेंज ना हो जाए. आई थिंक एंड ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन प्रोसेसेस फॉर श्योर, बट प्रोसेसेस शुड नॉट टेक ओवर द पीपल, बिकॉज people needs to be first. People need to be first and then the process. Processes are there to support that work. हम लोग कई बार processes पे इतने हावी हो जाते हैं. तो आप खुद सोचिए कि जो कंपनीज जो कभी जिनके सितारे बिल्कुल बुलंदी पे थे, चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे वो एनरॉन हो, किंगफिशर हो, कितना गाना गाते थे. These people used to sing about their efficiency, their professionalism, all kind of crap they used to do. और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज जो इंडिया की कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं, ऑडिटर्स हैं, वो उनके लिए काम करते थे. हमारे लिए तो हम तो वी कांट अफोर्ड दोस पीपल, एंड स्टिल द अमाउंट ऑफ फज दीज पीपल हैव डन इन द लाइफ. और आज जो उनकी इमारतें बंद पड़ी हैं, आज जो उनके सारे जेट के सब खड़े हुए हैं, प्लेन पार्क हैं, कहीं पे धूल खा रहे हैं, just because they were too process oriented, just because they were too publicity oriented, and there was hardly any groundwork with honest intention. I think that's what matters for bringing excellence. Don't think about an NGO or a corporate sector. जो भी आप कर रहे हैं, आप यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक्सीलेंस लाइए. यदि आप म्यूजिक पढ़ा रहे हैं तो म्यूजिक में एक्सीलेंस लाइए, खुद सीखिए, सिखाइए. यदि आप डिजाइनर हैं तो डिजाइन में एक्सीलेंस लाइए, बिकॉज मजा उसी में है कि आपका काम देख के लोगों को पता लगे कि यार ये दिव्या ने किया है. Thank you so much, sir. So how do you motivate the villagers to become aware of what you're doing at Goonj? तो देखिए, ऐसा है कि one of the thing which we need to understand while working with the community, that we really have to throw away our arrogance of knowing English and studying in the best possible colleges and institutions. Fine. तो मैं ये कहता हूँ, देखिए, आई कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ इंजीनियर्स. मेरी जो लास्ट जनरेशन है उसमें लोग ऐसा बोलते हैं, वी स्टिल हैव टू काउंट that there were about 22 pass outs of IIT Roorkee itself, my father's generation, and होगा पापा के सब cousins वगैरह मिला के. But I can tell you कि none of them actually know how to make a bamboo bridge. ये विलेज विजडम है. गांव के लोगों को पता है कि जुलाई के महीने में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ब्रिज को हमको ऐसे बनाने का है. फ्लैट ब्रिज काम नहीं करेगा यहाँ पर, वरना बह जाएगा. गांव के लोगों को मालूम है कि जब पानी आता है तो कितना किनारा, जो तट का जो साइड का है, वो भी पानी में चला जाता है. तो देन दे विल सजेस्ट यू कि भाई 4 फीट और थोड़ा लंबा ब्रिज बनाइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा. एंड बिकॉज वी एज ए कंट्री, वी एज द एरोगेंट अर्बन्स, we don't listen to the people for whom we are trying to work, and we only impose our agendas. Whole lot of our schemes miserably fail. पानी ब्रिज के नीचे की जगह ब्रिज के ऊपर से बहता है इतनी जगह पे. आज हैदराबाद में क्यों फ्लड्स आई, दिल्ली बॉम्बे में क्यों फ्लड आई? क्योंकि लोग आए, लोगों ने आपके घर के आगे सीमेंट की रोड बनाई 1 फीट ऊंची, और फिर आके आपको बोला आप लोलाइंग एरिया में रहते हो, जबकि आपका मकान तो सड़क से ऊपर था.
but they never asked us or we never spoke to them. तो we as an institution we just go and accept कि हमें नहीं आता ब्रिज बनाना, आप बताइए कौन जानता है. And that is how, if you start valuing people in their existing shape, you get the magic, you get the best out of people. Then you don't have to push anything, you don't have to motivate people. यदि आप ये कहते हो कि आपकी इज्जत बहुत बड़ी चीज है और हम कौन होते हैं, यदि आपकी लैंग्वेज वो है वर्सेस द लैंग्वेज की आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको नहीं मालूम ये कैसे होता है, ये हमारे एक्सपर्ट हैं, गाड़ी में आए हैं, ये बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, इनको मालूम है, इन्होंने तो 50 ब्रिज बनाए हुए हैं. अरे नहीं चाहिए तुम्हारी नॉलेज भाई, सीमेंट का ब्रिज बनाना ही नहीं है, बैम्बू का बनाना है. तो तुमको यदि बैम्बू की अकल है तो तुम्हें अकल है. अब तुम बैम्बू के ब्रिज वाली जगह यदि सीमेंट की अकल लेके जाओगे तो वैसे ही काम की नहीं है. So how do you value the wisdom of people? Then you don't have to motivate. You just make them a stakeholder. That's an excellent answer. We have Vartika now with a question for you, sir. Good morning, sir. Yeah, Vatika. Sir, as a non-governmental organization, tackling huge challenges is a part of your daily grind. So, can you share one or two stories of individuals whose lives have been changed because of your organization? Thank you, sir. देखो, एक जो मेरा गुस्सा है बहुत सारे लोगों से, कॉर्पोरेट एनजीओ सबसे, सरकारों से, जब वो ये दावा करते हैं ना अपने पीपीटी के, when the first slide comes and it says 100,000 lives changed, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुंदक आती है. मैं कहता हूँ भाई तेरे से अपनी जिंदगी तो बदलती नहीं, तो कैसे कह रहा है 100,000 लाइफ चेंज, मतलब क्यों फालतू दावा कर रहा है. मैं कैन आई बी ओनर ऑफ माई ओन लाइफ, मतलब मुझसे अपनी नहीं बदल रही जिंदगी. मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं करना चाहता, चले जा रही है एक तरफ से. और किसी गांव में जाके कुछ पेंसिल इरेजर बांट दिए, किसी को फल खिला दिए, कहीं हैंडपंप लगा दिया और आके पीपीटी पे लिख रहे हो 100,000 लाइफ चेंज. तो हमने ना तो ठेका लिया जिंदगी बदलने का, और ना हमारे बस की बात है, ना हमारी औकात है. वर्तिका, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट इन द क्रूडेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज टू पुट इट इनसाइड अस कि हमारी औकात ही नहीं है. हम अपनी हाउस हेल्प के लिए कुछ नहीं कर पाते. एट द एंड ऑफ द डे यदि उसके हस्बैंड उसको पीट रहे हैं, हम उसमें तो कुछ नहीं कर पाते. हमारा तब भी फोकस ये रहता है कि वो रोज आ जाए. आज यदि पिटी है तो 9 बजे की जगह 10 बजे आ जाए, बट आ जाए. बड़े सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग हैं हम लोग. तो मैं तो कभी दावा नहीं करता कि हम जिंदगी बदलने का काम करते हैं. हम खुशियां बांटने का काम करते हैं, और हो सकता है वो मोमेंट्री खुशी हो. मैं एक छोटी सी खूबसूरत सी स्टोरी समझा देता हूँ, और वो हमारे बड़े इनिशियल फेज की है. तो वैसे तो डिग्निटी फॉर वर्क होता है, हम किसी को मुफ्त में नहीं देते हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट इन विंटर्स बहुत साल से हम लोग चुपचाप निकलते हैं रात को 10 से 1 बजे के बीच में. और बहुत साल तक हमारा न्यू ईयर 31 दिसंबर भी वही हुआ करता था. मतलब यूज्ड टू एंजॉय अवर न्यू ईयर लाइक दैट. कहीं मूलचंद पे जाके पराठे खाते थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट. तो एक बार हम निजामुद्दीन में थे, और अवर डॉटर हु इज नाउ इन कॉलेज, मस्ट बी ऑफ योर एज, आई डोंट नो, वो इतनी सी थी. और हम अक्सर ये करते थे, मारुति 800 थी, तो हम कंबलों के ढेर के ऊपर उसको सेटल कर दिया करते थे. मैं, मीनाक्षी, माय वाइफ एंड और वन मोर वॉलंटियर समवन, 10 से 1 के बीच में रात को घूमते रहते थे. और बहुत ही, आज तक कभी बैनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया. तो देखते थे, उस समय आपको एक्चुअल नीड दिखती थी कि कौन ठंड में शिवर कर रहा है, तो आप उसको कंबल उड़ा देते थे, चादर रख देते थे, कुछ कुछ कर देते थे, जो भी होता था. और वो आज तक जारी है. अब तो और लोग बहुत करने लगे हैं. तो एक बार निजामुद्दीन से हम लोग निकल रहे थे, और निजामुद्दीन एरिया से, तो एक सज्जन थे who didn't have a leg and he was actually walking on the crutches. तो उनको there was somehow हमारे पास एक बड़ा ओवरकोट था, आया होगा कहीं से, तो हमने उनको वो ओवरकोट दिया. तो उन्होंने एकदम से उसको पहना, और जैसे ही हमने चलना शुरू कर, तो he tried to run behind our car. He tried to speed up his speed. तो obviously we could sense कि भाई ये तो नहीं भाग पा रहे हैं, तो हमने गाड़ी साइड में रोक ली. उन्होंने जैसे ही देखा गाड़ी साइड में रुकी है, उन्होंने ऐसे हाथ उठाए और बहुत जोर से चिल्लाए, बोलते हैं अब हुई है मेरी ईद. और वर्तिका, आज भी उस चीज को याद करके हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि यार, हमने तो सबने प्रेमचंद पढ़ा है, प्रेमचंद की स्टोरीज आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, और हर त्योहार, अभी दिवाली आने वाली है, हम सब लोगों के लिए कपड़ा बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग.
So I mean, the first symbol of a festival is a new piece of cloth. We keep Yes, sir. एक महीने पहले से प्लानिंग शुरू कर देते हैं. आप सोचिए रात को 12 बजे तक एक सड़क पे इंसान की का मतलब he doesn't even have an iota of Eid, a symbol of Eid. 12 बजे किसी का उतरा हुआ सामान पहनता है वो बंदा और फिर कहता है अब हुई है मेरी ईद. तो आपको पता भी नहीं लगता कि आप किसकी जिंदगी में क्या खुशी ला रहे हैं. और यकीन मानना कि मैं बहुत बिलीवर हूँ इस चीज़ का. मैं बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ, धार्मिक नहीं हूँ उस तरह का, बट मेरा दुआओं में बड़ा दम है, ऐसा मैं मानता हूँ. और ये हमने खुद के साथ होते हुए देखा. आई वेंट थ्रू कोविड जर्नी माई सेल्फ, फाइन, for almost 26 days, and then again admitted in July in a hospital in a very miserable shape. And then literally a village का देहरादून के पास में एक village के डॉक्टर ने, जिसको हम लोग नीम हकीम बोलते हैं, उसने मुझे सुबह तक जिंदा रखा. Before I was admitted in the hospital in emergency, for almost I remained there for 12 days. और जब खुद मई एंड में जब कोविड से निकल रहा था उस समय, आज भी मेडिसिन नहीं है, बट उस समय तो ट्रीटमेंट्स इतने भी डिफाइन नहीं थे. तो दिस इज अ स्टोरी आई ऑफन नरेट नाउ कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया उसके बाद, बहुत गुस्सा हुई कि तुमने क्यों नहीं बताया, ये वो होता है ना दोस्तों में. तो मैंने कहा Yes, भाई sir. बता Yes. के क्या करता मैं. और दूसरी बात ये है कि भाई इस बीमारी की तो दवा नहीं बनी, अभी तो दुआएं हैं, और ऊपर वाले की कृपा से और कुछ हो ना हो, हमने 20 साल में दुआएं बड़ी कमाई हैं. एंड दैट मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस. Yes, sir. That matters for all of us. I mean, that gives us happiness. More than the awards, what made us happy is that how people celebrated that by distributing sweets in their own villages. People who don't even know what is it all about. I mean, that's what keep us going. That's what make us happy. Yes, sir. Thank you, sir. So do you cater to homeless animals too, Mr. Anshu? We do not directly, for sure. क्योंकि हमारा जो पूरा मॉडल है that also works with we work with almost 400 odd partner organizations. और स्पेशली कोविड के टाइम में हम लोगों का एनिमल्स के साथ में बहुत काम हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब लेफ्ट ओवर फूड भी नहीं मिल रहा था और लोग सड़कों पे नहीं जा रहे थे. तो दैट इज टाइम वी एक्चुअली वर्क विद मैनी इंस्टीट्यूशंस हु वर्क विद दोस एनिमल्स ऑल अक्रॉस. तो वो हम लोग करते हैं. और उसके अलावा एक हमारे यहाँ सामान बहुत आता है. तो जैसे अभी जो आपके टूटे हुए बर्तन होते हैं, हल्के से फटे हुए कंबल होते हैं, गद्दे होते हैं, वो सब विंटर्स में बहुत चाहिए होते हैं एनिमल शेल्टर्स को. वो हमारे यहाँ से लगातार पैन इंडिया जाता है, बहुत लार्ज स्केल पे. So Abdul Hanan, you can come up with your question. Are you there, Abdul? Okay, so we can take the next question then by Tanya. और अब्दुल आप म्यूट पे हैं. First of all, good afternoon, sir. Sir, before asking a question, I would like to say one thing, that there are many people who say that we'll be doing this, we'll be doing that, but they never take an initiative. But we need more people like you who transform their ideas into reality. And the question which I would like to ask from you is, what significant changes do you foresee in the society post-COVID-19? To comment further on your first comment, I always tell people कि देखो, now the time has come when we don't need, for some time we don't need thinkers anymore. We need more doers, we need more action. That is one. To relate it to the second question, I think the virus has given us a chance to do as much as possible and to pay back to the people because of whom we have been staying in our own beautiful houses. We are safe, and 6 महीने के अंदर हम में से कोई भूखा नहीं रहा, कोई सड़क पे नहीं गया, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से ये दुनिया बट गई. जिसके पास खाना था वो घर के अंदर रहा, जिसके पास खाना नहीं था वो घर के बाहर चला गया और सड़कों पे चला गया. मतलब दुनिया, कंप्लीट वर्ल्ड was divided, is divided in now 2 parts. इसके अलावा कुछ नहीं है. सिंपल सी बात है.
तो everyone who has food needs to pay back, not to give back. गिव बैक में फिर हमारी एरोगेंस आ जाती है. पे बैक, क्योंकि कर्जा है, किसानों का कर्जा है, मजदूरों का कर्जा है, उसको चुकाने का मौका मिला है. दूसरा अब्दुल ये है कि हम सबको ये समझ आ गया है, मैं दोबारा से अपने को रिपीट कर रहा हूँ, मेरे आजकल कुछ पेट डायलॉग होते जा रहे हैं, कि हम सबको समझ आ गया है कि 4 टी शर्ट बहुत है जिंदगी में. हम सबको समझ आ गया है कि 10 जोड़े जूते बिल्कुल बेकार हैं, वो काम ही नहीं आते बहुत बार. आजकल आधे से ज़्यादा लोग वेबिनार पजामे के ऊपर फैंसी टी शर्ट पहन के कर रहे हैं. तो एवरीवन नोज, अपने घरों के बर्तन देख के आप बोर हो गए हैं, शो पीस देख के बोर हो गए हैं, कर्टन देख के बोर हो गए हैं, फर्नीचर देख के बोर हो गए हैं. तो अब यदि अभी भी हमें समझ नहीं आया कि भाई नीड्स बड़ी लिमिटेड है और ज़िंदगी अल्टीमेटली आपको दाल चावल चाहिए, और यदि दाल चावल नहीं मिलेगा तो सड़क पे आ जाओगे, तो जो दाल चावल दे रहा है उसको नमन करना, उसको, उसकी ज़िंदगी को सुधारना, उसकी ज़िंदगी में साथ खड़े होना शुड बी एन एम. सोसाइटी का चेंज, let me tell you that I was very hopeful in the initial phase of when I saw large number of people coming out and standing with the fellow citizens. But I am also at extreme pain कि इतनी बड़ी मिडिल क्लास होने के बावजूद हमारे देश की इतनी हजारों लाखों हाउस हेल्प सड़कों पे क्यों आई. वो 2,000 रुपये से ज़्यादा क्या मांग रही थी? ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने अप्रैल तक की सैलरीज नहीं दी उनको, जबकि उनको सैलरीज मिली हैं. मतलब बहुत सारे लोगों को उनके ऑर्गेनाइजेशंस ने सैलरी दी हैं, सरकारी सैलरीज भी मिली हैं, बट उन्होंने उस सैलरी का वो हिस्सा अपनी हाउस हेल्प को नहीं दिया, या डेली बंदे को नहीं दिया जो मजबूरी में नहीं आ पा रहा था, या जिसको डर के मारे आप नहीं बुला रहे थे, और आपने अपनी हाउस हेल्प को निकाल दिया. जबकि हाउस हेल्प से जो आपकी परमानेंट हाउस हेल्प थी लेडी, आपने उसको भी निकाल दिया. जबकि सच बात यह है कि हाउस हेल्प से आपको खतरा नहीं था, आपसे हाउस हेल्प को खतरा था, क्योंकि आप बाहर जाते थे, वो तो घर में रहती थी. तो यदि हम नहीं समझ पाए, और बदकिस्मती से लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड दिस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टेकन दिस एज वन ऑफ द थिंग व्हिच हैपेंड इन आवर लाइफ. वो गए थे, सड़कों पे निकल गए थे, कोई बात नहीं, पहले भी वो मैटर नहीं करते थे, आज भी मैटर नहीं करते. एज लॉन्ग एज जब हमें चाहिए हमारी मेड, हमारी हाउस हेल्प आए और हमारा खाना बना जाए, वी आर हैप्पी. एज लॉन्ग एज हमारे ड्राइवर को फुल टाइम जॉब ना मिले बट ओकेजनली आ जाए, वी आर हैप्पी. तो दैट सेल्फ सेंटर्डनेस is gone in some cases, but has to go in a much bigger way. और यदि इस वायरस के बावजूद हमें समझ नहीं आया कि सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है, जितने आप हेल्दी दिख रहे हो, वायरस आपसे कहाँ से चिपटेगा आपको पता नहीं लगेगा. आपके 5 ईयर के 10 ईयर के प्रोजेक्शंस कैसे खत्म हो गए. आप हार्वर्ड जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ का कैंपस एंजॉय करना चाहते थे, आजकल जूम पे क्लास ले रहे हो. तो ये सब चीज़ें कितनी फालतू किस्म की हैं और कैसे एक सेकंड में ख़त्म हो जाती हैं. जब तक हम लोगों को यदि अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे नहीं पता कब समझ आएगा. And one more thing I'd like to say that you are literally an inspiration because you are doing for the betterment. You are working for the betterment of the society, not for the publicity. But in the present era, the most of the people do the better, do the work for their publicity. So that's why you are my inspiration now. But Abdul, I am working for myself also. You know, if I look back and what I was 20 years back and what I am 20 years back, fine, I think I am. If nothing else, I have really learned a lot. मतलब मेरे जो इंस्टीट्यूशन ने सिखाया था उससे ज़्यादा मुझे गांव ने सिखाया, उससे ज़्यादा मुझे कम्युनिटीज़ ने सिखाया. ये जो लड़ने की ताकत आई है किसी भी चीज़ से, वो पहले मुझे मेरे माँ बाप से मिली, और उसके बाद मुझे हर एक उस इंसान से मिली जो जो डिज़ास्टर के बीच में होता है, जो पानी के बीच में होता है, और उसके बाद भी जिंदा रहने का उसमें जो अभी शायद तान्या और वन ऑफ योर फेलो स्टूडेंट वाज आस्किंग, वो चीज़ हमें उनसे मिली कि देन यू गो बैक टू बिहार एंड यू सी ओके, दोबारा से झोपड़ी बन गई, दोबारा से दे आर सेलिब्रेटिंग छठ पूजा, एंड दे एग्जैक्टली नो कि जुलाई में दोबारा फ्लड आएगा. तो वो जो जीने का जज्बा है कम वॉट में, वो आपको उन लोगों से मिलता है. वो मेरी लर्निंग है. तो आई एम एक्चुअली वर्किंग फॉर माय बेटरमेंट आल्सो. इट्स वेरी सिंपल. Thank you so much, sir. Absolutely. Thank you for that wonderful answer. We have Tanya now, the last in the line. Tanya, are you there? Till then, we can take the next question.
Did you get support from the local administration in your initiatives, or was there any hindrance due to the bureaucratic issues? So hindrance keeps happening and the support also keeps happening. It's very simple. Uh, तो ये तो सब I think I often say that all this is like a war, and war you never win with the weapons, war you win with the strategy. तो जहाँ पे आपको लगेगा कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ठीक ठाक है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, आप उनके साथ कीजिए. जहाँ पंचायत दिखेंगी उनके साथ कीजिए. जहाँ एक you find couple of youth with this spark in their eyes, make them partners and work with them. I think that's how we have been operating. So or we have immense trust on the and faith in the way we have seen working the local grassroots NGOs. वो हमारे सबसे बड़ी strength है, वो हमारे सबसे बड़े partners हैं, because they know the community, they know the hardships, they understand the dynamics, local needs much better than us, you know. तो उनके साथ में काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जहाँ जहाँ जरूरी होता है काम करते हैं. और बिकॉज इन एनी केस एवरी सिंगल रोड वी आर मेकिंग और ब्रिज वी आर मेकिंग, द रिवर इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यू हैव टू टेक पीपल अलाउंग. वहाँ पर जब सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो साथ लेना ही होगा. वी डू दैट. Only difference is that instead of going to the big ministers and the bureaucrats, we build up relationship with the grassroots or the local administration much more, क्योंकि उन लोगों के साथ में आपको काम करना है. तो क्योंकि कई बार ये होता है कि आप ऊपर से जान पहचान निकालिए और एक आदेश पास करवा दीजिए, that becomes a burden and another work for them. But the moment they see a value addition in their own areas, in their work, they become your partner in most of the cases. और बाकी तो देखिए ये इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है. खाली एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी को गाली देना गलत है, क्योंकि जब आप रेड लाइट जंप करते हैं और आप उस समय में और आप फाइन देने के लिए पुलिस वाले को किसी को रिश्वत दे देते हैं, तो उस समय में ब्यूरोक्रेसी का करप्ट होने से ज़्यादा हम खुद करप्ट हैं. तो करप्शन और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोसाइटी के हर हिस्से में है. वी जस्ट कांट सिंगल आउट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी फॉर दैट. इट्स वेरी सिंपल. प्राइवेट सेक्टर में कितने इनएफिशिएंट लोग हैं, मिठाई वाले कितने इनएफिशिएंट हैं, कितने चोर हैं, कितने मेडिकल सेक्टर में कितने हैं, एजुकेशन सेक्टर में. एवरीवेयर यू हैव गुड पीपल एंड बैड पीपल. Simple. It's about people. It's not about institutions. So you've been working so closely with people. So in your experience, I mean, the rural versus the urban, changing the mindsets, how would you say? Which side is it easier? Urban is complicated because urban, mindset is mindset because it is set. It is very complicated here in urban. Rural is much easier. Much easier. I mean, you still find, देखिए अर्बन में क्या है कि अर्बन में बहुत सारे कंपटीशन के बाद, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज के बाद में लोग सेटल हुए हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने स्ट्रगल नहीं करी. हमारे जैसे लोगों ने, सब लोगों ने, आपने, हमने, बहुत लोगों ने स्ट्रगल की. हमने नहीं की होगी, हमारे पेरेंट्स ने की होगी, तब कहीं जाके वी कुड मेक अवर स्पेस इन अर्बन इंडिया. इट्स ए हाईली कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इन एनी केस, because their resources are very less and people are much more to fight for those resources, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन की सीट ही क्यों ना हो. and then the biggest proof is that कि कितना compete करना पड़ता है लोगों को. तो वो एक नेचर में अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है कि मैं अपने को कैसे ऊपर दिखाऊं, दूसरे को कैसे नीचे दिखाऊं, because that becomes your survival stuff in the city. Rural India that way is still very simple, very plain. I will never forget people in the disasters, जब आपके घरों में बाढ़ आई हुई है और अर्थक्वेक है और आप हम जैसे लोग जब हम जाते हैं तो आप तब भी हमसे चाय पूछते हैं. जो भी आपके हाथ में यदि एक चिप्स का पैकेट कहीं से आ गया तो आप वो हमारी तरफ बढ़ा देते हैं. I mean, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं बताइए. तो आई वुड से कि इफ वन लाइनर इज मच ईजियर इन रूरल. So towards the close of this webinar, Mr. Anshu, I'd request you to give a message for our students. तो बस मैं ये कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में और फेसबुक में मास्टर बनने में इट इज़ जस्ट एक्सट्रीमली एब्सोल्यूट वेस्टेज ऑफ योर टाइम. आप सब लोगों को एक बार ज़िंदगी मिली है, हम सबको एक बार ज़िंदगी मिली है, और इट इज़ गुड टू लिव द
dreams of our parents, but we cannot be solely or succumb to those dreams. बहुत ज़रूरी है कि हम जागते हुए सपने देखें, क्योंकि सोते हुए सपने तो आप याद ही करते रह जाते हैं, फिर सोचते रह जाते हैं कि वाकई ये था कि नहीं था। तो इसलिए जागते हुए सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और हम में से हर एक इंसान का सपना होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इस प्रेशर में मत आइए कि यदि आपने लॉ पढ़ लिया है या आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो आपको उसी प्रोफेशन में काम करना है। ये आपकी बेसिक एजुकेशन है जो ज़िंदगी भर काम आएगी। तो जो मैंने पढ़ा, मैंने यदि इकोनॉमिक्स करी, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं अल्टीमेटली सप्लाई एंड डिमांड के धंधे में जाऊँगा, जो मैं कर रहा हूँ, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के धंधे में जाऊँगा। तो एवरी सिंगल एजुकेशन ऑफ व्हाटएवर स्ट्रीम इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। बट let's live our life. Let's have dreams. Let's fulfill those dreams. और हम सब, आप all 600 of you, most of you are very very fortunate, क्योंकि if I talk about my parents generation, उनकी पूरी जनरेशन का जो स्ट्रगल थी, स्ट्रगल वाज टू सर्वाइव, कि उनके बच्चे कैसे पढ़ लिख जाएं ठीक ठाक एंड ऑल दैट, या कभी रिटायरमेंट के बाद 1-2 कमरों का 3 कमरों का कोई घर बन जाए। दैट इज हाउ ऑल आवर पेरेंट्स हैव लिव्ड देयर लाइफ। हम लोगों की जो स्ट्रगल है, इंक्लूडिंग मी, हमारी स्ट्रगल इज नॉट द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव, अवर स्ट्रगल इज टू ग्रो। बाकी हमारा घर, खाना पीना तो सिक्योर्ड है। 6 महीने से हमने कुछ नहीं करा तब भी हमें खाना मिल रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रिविलेजेस एंड लिव अवर लाइफ एंड सी कि ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ हो गई और गुड़गांव के 4 क्लब की मेंबरशिप ले ली। सारे क्लब बंद थे अभी 6 महीने से, एंड वी वर जस्ट dying to have an ice cream outside our home. So that ice cream wala became much more important for us than those mixed ice creams in one of the biggest possible club of Gurgaon. तो आई थिंक बस मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें आज तक मैटर नहीं करी हैं उनको दोबारा से देख लें, वो बहुत मैटर करती हैं। और अपने सपने पे काम कीजिए, और सपना ज़रूर देखिए, उस पर लग के काम कीजिए, और 2-4 साल तक ज़िंदगी में शांति से काम कीजिए। और एक और पॉइंट ये है कि जब आप अभी जाएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे, तो हम लोगों को बड़ा डेस्परेशन होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि कोई एक घर खरीद लो, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा 2-4 साल के अंदर। तो मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि इसका मतलब तो तुम HDFC सिटी बैंक के एम्प्लॉय बन जाओगे। अपने सपने पे काम करने की जगह तुम लोग इंस्टॉलमेंट के लिए कमाओगे। आई थिंक वी वर लकी कि हम लोग इन झंझटों पे नहीं पड़े। वी वर एब्सोल्युटली हैप्पी विद मारुति 800। वी थॉट इट्स अ बिग कार, and we enjoyed that, and we never got into, or we never succumbed to the installments, the craziest credit card. I don't even today use a credit card despite so much of travel, and I'm happy because हमारे पास किसी का कर्जा नहीं है। कम मिलेगा कम खाएंगे, ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा खाएंगे। गोलगप्पे मिलेंगे गोलगप्पे खाएंगे, हर शहर के खाएंगे, बिकॉज आप 5 स्टार में ठहरा लीजिए, हमें तो सड़क का समोसा चाहिए, बिकॉज उसके साथ हम बड़े हुए हैं। बस तो सपने पे काम कीजिए। और जो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इस देश को डूअर्स की ज़रूरत है इस समय, सिर्फ टॉकर्स थिंकर्स की ज़रूरत नहीं है, करके दिखाना चाहिए। और वायरस हैज गिवन अस इनफ अपॉर्चुनिटी टू डू एज मच एज वी कैन। लेट्स डू दैट, एंड वी आर देयर, काउंट अस इन। Anytime you see a dream, write to us. We will work with you. I personally work with hundreds of individuals and small institution, and my institution also, and I'll be more than happy to do that. Mr. Anshu, thank you again for accepting our invitation and bringing to mind the awareness that what you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others, and to become somebody who makes everybody feel like a somebody. On behalf of Asian Education Group, we would like to present a memento to you as a token of our appreciation. Thank you very much for being here. Thank you.